हेलो मोर प्रिय छात्र छात्री पुणी एक नुआ भिडियो समस्त को स्वागत। भिडियोटी आरंभ करने पूर्व मु जन देवाक चाहे जे यही भिडियोटी केवल नवम श्रेणी छात्र छात्री मानक कहीं यही भिडियो आम जहाँ भी डिस्कसन करने को जाऊे सबू इंग्राजी बहीर माने नवम श्रेणीर इंग्राजी बहीर प्रथम पाठ प्रथम प्रोच जहाँकि हूँ द प्राइसलेस गिफ्टर किसी कम्प्रिहेंशन क्वेश्चन आंसर। तो वीडियो को समस्ते कम्प्लीटली प्रथम शेष पर्यंत देखिब ता सहित हृदय लाइक करी सब्सक्राइब करदेव और निज सांग मानू शेयर करने संगे संगे जदि किसी डाउट रही तो वीडियो तले कमेंट कर। तो आउ गोटे कथा जदि यही पीडीएफ टी क्या दरकार बा क्या जदि पीडीएफ रो माने हार्डवेयर दरकार तो निम्न रे डिस्क्रिप्शन रे जाइए नंबर व्हाट्सएप नंबर जहाँकि व्हाट्सएप ग्रुप मध्य क्रिएट करा जाइए। तो सही ग्रुप रे शीघ्र शीघ्र ऐड हो जाओ जहाँद्वारा एपरी पीडीएफ गुड़ाक बा आंसर गुड़ाक सही ग्रुप रे अपलोड करा जाउछि। तो वीडियो को देखो आरंभ करवा पिला माने देखो एक नंबर दी व्हाट डिड द राइटर एक्सपीरियंस इन द रेस्टोरेंट राइटर कौन एक्सपीरियंस थिला। देखो आंसर हो कौन द राइटर फेल्ट दैट द रेस्टोरेंट वाज वेरी क्राउडेड एंड लॉट्स ऑफ पीपल वर ईटिंग एंड ड्रिंकिंग देयर ही फाउंड सम ऑफ द चेयर एंड टेबल हैड बीन पुश्ड इनटू ए कॉर्नर। बस एतिक है नेक्स्ट कहला 2 नंबर क्वेश्चन कहला व्हाट डिड ही नोटिस देयर आंसर हे कौन ही नोटिस देयर ए वेरी यंग गर्ल गिविंग हिम ए सैड लुक माने ताको दुख नजर रे देखुला। तृतीय क्वेश्चन देख कौन कहला व्हाट डिड द राइटर्स फर्स्ट इंप्रेशन ऑफ द गर्ल आंसर हे द राइटर हैड द फर्स्ट इंप्रेशन दैट द गर्ल वाज रेदर अनहैप्पी। ओके चतुर्थ नंबर क्वेश्चन कहला व्हाट मेड द राइटर सरप्राइज्ड कहीं आश्चर्यचकित हेले द राइटर आस्क्ड द कैशियर इन ए लो वॉइस व्हेदर ही वाज एन इंडियन एंड हर लुकिंग एट हिम वंस मोर while going out make the writer surprised। 5 नंबर कहला why did he inquire from the waiter कहीं से मैंने वेटर को पचारे कहीं the girl's interest in him aroused his curiosity in her for which the inquired from the waiter है एटा हम आंसर। 6 नंबर कहला what information did he get from the waiter से वेटर नु कौन इनफॉरमेशन आनिले आंसर है the information which he got from the waiter was that the girls had her lunch in that restaurant on Saturday only, that is on her payday he was also told him she did not earn very much। 7 नंबर क्वेश्चन कहला where did the writer go on the next Saturday आंसर है on next Saturday the writer went the very same restaurant मैंने से समा रेस्टोरेंट द राइटर वेंट टू द वेरी सेम रेस्टोरेंट where he had met the poor girl और अनहैप्पी गर्ल जो देखी है यंग गर्ल कहले भी चलो। 8 नंबर कहला why did he take the chair opposite her कहीं से आनिले बिकॉज आंसर है कौन he took the chair opposite her because he wanted to introduce himself to her and start a conversation। 9 नंबर कहला what query did the girl make about the writer आंसर है query that the girl made about the writer was whether he was an Indian। देख पिला मैंने बहुत सजाड़ी की आंसर करी तो भल से टे मुखस्त करने सहित देखी दियो भल से 10 नंबर कहला व्हाट इम्प्रेशन डिड द राइटर हैव द फैमिली ऑफ द गर्ल आंसर है एज टू द फैमिली ऑफ द ओल्ड the writer came to the know that her brother who was working in India was a soldier and he was her on India was a soldier and he was her only guardian। Her mother was greatly worried about him as she had not heard from him for a long time। देखो पिला मैंने एटा सजाड़ी लिखे डबल टाइपिंग है। 11 नंबर कहला हाउ वाज द राइटर treated at Maggie's house who was there to welcome him आंसर है the writer was treated cordially and eagerly was treated cordially and eagerly there was Maggie's mother to welcome him
12 नंबर कहला व्हाट वाज मिस्टर बेथी डूइंग व्हेन द राइटर मेड हर व्हाई वाज सी अनविलिंग टू गो फॉर ए हैंडशेक आंसर हम व्हेयर व्हेन द राइटर मेड मिसेस बेथी she was making cake in the kitchen she was unwilling to go for a handshake as her hands were covered with flour ହେଲା नेक्स्ट 13 नंबर कहला व्हाई डिड द गर्ल यूजुअली विजिट द रेस्टोरेंट ऑन सैटरडे द गर्ल्स यूजुअली विजिटेड द रेस्टोरेंट ऑन सैटरडे बिकॉज सैटरडे वाज द पे डे एंड ऑन दिस डे शी could afford to spend some money on a meal at the restaurant ହେଲା ଏତିକି ହେବ ଆନ୍ସର 14 ନମ୍ବର କହିଲା ହ୍ୱାଟ୍ ଡିଡ୍ ମିସେସ୍ ବେଥି ବିଲିଭ୍ ଆବାଉଟ୍ ଦ ରିଙ୍ଗ ଆନ୍ସର ହେବ ମିସେସ୍ ବେଥି ବିଲିଭ୍ ଦ ରିଙ୍ଗ ୱାଜ୍ ମିରାକୁଲସ୍ ଥିଙ୍ଗ ଇନ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ହି କୁଡ୍ ସି ଦ ପାଷ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଦ ଫ୍ୟୁଚର ସି ଅଲସୋ ବିଲିଭ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଫ୍ ୱାନ୍ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟେଡ୍ on a distance person while gazing into it one would be able to see him and what he was doing এটা হবে आंसर 15 नंबर कहला what made the author tell a lie about the ring କାହିଁକି ମିଛ କହିଲେ आंसर ହେବ କ'ଣ megis এটা ଟିକେ ମିଷ୍ଟେକ୍ ହେଇଛି ବୋଲେ forever ହେଲା megis forever request to the author to look into the crystal and tell Mrs. Betty that Frankie was all right and alive made him tell a lie about the ring 16 नंबर कहला did the telling of a lie benefit Mrs. Betty कौन लाभ देला कि yes obviously yes it did since tear of happiness welled up in Mrs. Betty eyes and he soon recovered from his illness हला बहुत जल्दी रोगरू मुक्त हो गले 17 नंबर कहला why did the writer feel guilty about himself कहीं की guilty feel कले because the writer felt guilty about himself because he told a lie to Mrs. Betty about her son being well and alive enough so the Frankie had been killed in the fighting on the frontier मिछा कही दिले ऑलरेडी मरी जाइला से 18 नंबर कहला देखो what was Maggie's gift to the writer आंसर देखिबा Maggie's gift to the writer was a shilling which she had earned with so much toil बहुत दुखरे कष्टरे परिश्रम करे से रोजगार कर दिला 19 नंबर कहला देखो why was it a priceless gift हला precious gift कहीं की the shilling was a very precious gift because the poor little girl had earned it with so much toil and it meant a huge sacrifice to her moreover the joy of making such a gift Ben was beyond all price 20 नंबर कहला did Maggie love her brother dearly आंसर अब Maggie had earned the shilling which she gifted to writer with so much toil she had great joy in making the offer for the sake of her brother who was no more she had great relief that with the shilling the writer would buy flower and put them on her brother graves the bears ample testimony to Maggie's deep love for her brother एटा थिला पिला माने मैं आमर प्रेसलेस गिफ्टर केतेटा कंपैरिजन क्वेश्चन रो आंसर गुडाक पुणी थरे कहूँ जदि पीडीएफ टी दरकार पिला माने डिस्क्रिप्शन रे नंबर अच्छी व्हाट्सएप नंबर जाकि ग्रुप रे ऐड हो जाओ एवं ग्रुप रे ऐड होला परे सही पीडीएफ टी मु सेदारे शेयर कर देबी जदि किछि डाउट होछि पिला माने कमेंट करो ता सहित लाइक करके सब्सक्राइब मध्य कर दियो थैंक यू।